आपको क्या लगता है कि आईआईटी ने क्या रोल प्ले किया उसमें? आपकी जो कंपनीज है जो जिसमें आपने पहले काम किया उसने क्या रोल प्ले किया? किस तरह आप देखते हैं इन सबके ये पूरी जर्नी को, लास्ट आई थिंक 10 साल की जर्नी को? I think joining an IIT gives you two very big benefits. Like, एक तो ये होता है ना कि you are a culmination of the people you hang out with. तो आप जब आईआईटी में होते हो, आप देश के कुछ सबसे स्मार्टेस्ट लोगों के साथ होते हो, तो आपका सोचने का नजरिया बदल जाता है। आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी से भी दिखने लगती हैं। आप ज्यादा चीजों के बारे में क्वेश्चन कर पाते हो कि अच्छा, ये भी ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, ये भी कर सकते हैं, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्लस आईआईटी में पूरे देश से लोग आते हैं, तो आप एग्जैक्टली। कल्चरों के बारे में भी जानते हो। तो दैट दैट पर्सपेक्टिव, एंड देन ये तो तब की बात होती है जब वो 4 साल होते हैं। उसके बाद एज यू कीप मूविंग, यू हैव क्रिएटेड दीज बॉन्ड्स फॉर एवर, एंड दीज पीपल स्टार्ट बिकमिंग बिग इन देयर ओन एरियाज। सो आगे जाके आपको कभी भी कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ कुछ काम होता है, यू वांट टू अंडरस्टैंड सम इंडस्ट्री, और यू वांट टू लाइक कनेक्ट विद पीपल ऑफ एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, दैट बिकम्स रियली इजी। यू सर्च दैट कंपनी, आपको अपने कॉलेज के 10 लोग मिल जाएंगे, दो आपके बैच में थे, आप कॉल करोगे, दे विल बी हैप्पी टू आंसर। सो दैट कनेक्शन तो हेल्प्स अ लॉट। नेटवर्क उसका काफी इम्पोर्टेंट है। यस, दैट नेटवर्क्स हेल्प यू अ लॉट, एंड इट लाइक उसका उसका हेल्पफुलनेस और बढ़ता जाता है विद टाइम। Thanks a lot for joining a Kota Junction podcast, and we're very excited to have you as a guest and know more about your story, your background, what are you up to right now. Sure. So maybe a small introduction मेरे बारे में. Born and raised in Kota, completed my education also from India, from engineering, and then followed by MBA. And then I've been living outside of India for last 10 11 years, Nice. mainly working in management consulting and also entrepreneurship. And ये बस छोटा सा contribution है to giving back, of highlighting amazing stories of people who are from Kota or are contributing to Kota in some way. And yeah, we've had now 7 or 8 episodes recorded from people like who are IES, IPS, entrepreneurs, Mm. doctors, professors. Uh, yeah. So yeah, very excited to chat with you in next 1 hour. Where did you grow up? Where did you complete your education? If you can start from there, that's Sure. very So I'll nice. also introduce myself shortly. So yeah, I was born in Jaipur, but completely raised in Kota. अच्छा. मैं HKG क्लास से 10th क्लास तक मैं कोटा में ही था, 12th क्लास तक। उसके बाद आई मूव टू जयपुर। सो या completely brought up in Kota. That's how it's been. And after Kota, after Jaipur, I moved to Banaras for my graduation from IIT BHU. उसके अच्छा. बाद well, उसके बाद जॉब का सीन था, तो आई वाज वर्किंग इन गुड़गांव फॉर अ कपल ऑफ इयर्स विद मास्टरकार्ड। फिर उसके बाद बैंगलोर में था कुछ टाइम, जिंगा के साथ आई वाज वर्किंग विद सिक्योर फिट। फिर देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आईएसबी अगेन अच्छा. हैदराबाद। currently I'm working with Dream 11 for almost a year and a half in Mumbai. Nice. So Nice. yeah, And you are currently based in Mumbai. yes, I'm currently based in Nice, nice. And what exactly is your job profile? Like, how would you define it? Like, because there are lots of areas, right? Marketing, Mumbai. HR, ops. तो आप exactly कौन से area में आपका specialization है? My specialization was in marketing, and in terms of my job, अभी मैं मतलब I'm working as a product manager at Dream 11. So it is more of a managerial job than any other thing. So yeah, I mean, I can go deeper into what a product manager does as well. हाँ, मतलब थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को बताएंगे कि ये ड्रीम 11 क्या है और आई थिंक मुझे जितना पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है। आई थिंक इंडिया में काफ़ी यूजर्स हैं इसके।
जी। बट जिनको नहीं पता है उनके उनको कैसे समझाएंगे व्हाट इज ड्रीम इलेवन, क्या अ, करती है? तो ड्रीम इलेवन क्या करती है? आर एस्पिरेशन इज टू बिकम द सेकंड स्क्रीन ऑफ समवन हु इज वाचिंग क्रिकेट और एनी मैच ऑफ एनी स्पोर्ट। तो आपका जब स्पोर्ट्स नॉलेज होता है ना, तो आप सोचते हो यार मैं और क्या कर सकता हूँ स्पोर्ट्स नॉलेज के साथ, कि मुझे पता है ये प्लेयर ज्यादा अच्छा खेलता है, ये प्लेयर ज्यादा अच्छा खेलता है। तो जब मैच होता है तो ड्रीम इलेवन लेट यू सिलेक्ट अ टीम ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग। जैसे मान लो क्रिकेट का एग्जांपल लूं मैं, तो 22 players play a game, हम्म। 11 from each side. So you can actually just create a team of 11 people from both the teams, and then you compete with more people. And जितने ज्यादा लोगों के साथ आप compete करते हो, फिर आप compete सिर्फ ऐसे नहीं करते हो कि किसकी टीम बेटर है, फिर उसमें आप अपना कुछ पैसा भी लगाते हो, तो there is some skin in the game. So if your team is great, then you have a chance to win big. So that is how Dream 11 works. तो बेसिकली एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। Yeah, You yeah. can It's a play games with anyone or with the computer or whatever. Yeah, so you don't play with computer per se, but it's based on a real life match. तो जो मैच अच्छा। एक्चुअल में कहीं हो रहा है, उसके साथ साथ उसी मैच को रिलेटेड आप कुछ खेल सकते हो on the app. So it's a game, but it's a game based on something that is actually happening in the world, which is a sports match. अच्छा। अच्छा। बट द आउटकम्स ऑफ, जैसे अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उस गेम में, तो जो रियल मैच चल रहा है उसके उसमें क्या चल रहा है, उस उसके बेसिस पे ही मैं मेरी विन और लॉस डिसाइड होगी कि जी कैसे होता है? बिल्कुल। जी बिल्कुल, अच्छा। उसकी बेसिस पे ही होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कल के मैच में रोहित शर्मा को अपनी टीम में रखा था, तो every run that Rohit Sharma scores, every four that he hit, I was scoring points. तो आपने अच्छा। जो team बनाई है उन प्लेयर्स के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब आपको पता है कौन सा अच्छा। प्लेयर आज खेलेगा, आज नहीं खेलेगा, आप उस हिसाब से पिक करते हो। तो जितना ज्यादा आपको जानकारी होती है मैच के बारे में, यू आर एबल टू डू बेटर। अच्छा। और इसमें मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं आप? कौन से डिपार्टमेंट में हैं या कौन से प्रोफाइल में हैं? तो आई वर्क विद द एक्विजिशंस टीम। आवर रोल इज बेसिकली, मेरी टीम का रोल है कि अगर कोई नया यूजर आ रहा है गेम में, तो हाउ डू वी मेक श्योर कि उन्हें सब समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। हाउ डू वी मेक श्योर कि वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि ड्रीम इलेवन ऑफर क्या करता है, और वो ड्रीम इलेवन को खेल खेल के समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई, दिस इज हाउ आई कैन, दिस इज व्हाट ड्रीम इलेवन हैज टू ऑफर, एंड दिस इज हाउ आई कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ ड्रीम इलेवन। अच्छा। So I work in the acquisitions team. We work very closely with the marketing team also. Get more people on the platform, help them play on the platform. अच्छा। और थोड़ा आइडिया देंगे कि कितने प्लेयर्स टोटल हैं अभी आपके प्लेटफॉर्म पे? Uh, अभी हम लोग एक माइलस्टोन हिट करने वाले हैं। आई थिंक जब तक ये वीडियो आउट जाएगा तब तक हो भी चुका होगा 200 मिलियन यूजर्स का। So we have a ओह। base of 200 million registered users. We are gonna hit that milestone in a week almost. तो ऑलमोस्ट लाइक 20 करोड़ Yes. यूजर्स हैं आप लोगों के। तो काफी मतलब काफी बड़ा माइलस्टोन है ये तो। और Yeah, it's a milestone. आपने कैसे मतलब आपका जो जर्नी है फ्रॉम स्कूलिंग to IIT, and then you also did some work in between, and then ISB. How has that journey has been like? Why did you choose IIT? I think I guess definitely कोटा का influence तो रहा ही होगा, हाँ, but definitely. why आप IIT में क्यों जाना चाहते थे और कैसा आपका वो सफर रहा? So I'll start from beginning थोड़ा सा, early childhood when I was in fifth sixth। तब तक थोड़ा ये था कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा पेरेंट्स से भी आता था, और ऑब्वियसली बीइंग इन कोटा दैट प्लेड अ ह्यूज पार्ट। तो बचपन से रहता था कि ये स्ट्रांग रखना है, और थैंकफुली वो हो भी रहा था कि वो स्ट्रांग था। तो हम्म। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बचपन से आई हैड एन इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स, और नंबर्स भी सही आ जाते थे। फिर जब नाइन्थ टेंथ आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि बायोलॉजी इज नॉट फॉर मी। एंड तब क्लियर कट दो ही चॉइसेस होती थी कि भाई या तो यू बी एंड अप बिकमिंग एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। एंड हम्म। आई हैड फिगर्ड कि आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। तो एक वो चॉइस मेरे पास कभी काइंड ऑफ मैं क्लियर था कि भाई मुझे डॉक्टर नहीं बनना है।
हम्म। Maybe it would have been a great choice, but I don't know. But हाँ, उस टाइम पे ये था कि भाई फिजिक्स अच्छी लगती है, और engineering is something that suits very well with that subject. तो नाइन्थ टेंथ कंप्लीट करने के बाद नंबर्स भी ठीक थे, तो तब तक क्लियर हो गया था कि यार अभी कोटा में भी है, जेई प्रिपरेशन भी सॉर्ट हो जाएगा, अच्छे से जेई की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, घर के घर में रहेंगे, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो दैट played a huge part in me going through the route of engineering. फिर 11th 12th में पढ़ाई स्टार्ट हुई। 11th में आई वाज डूइंग गुड, अच्छा इंटरेस्ट था, और आई बीन अ लॉट ऑफ दोस्तों वाला पर्सन, सराउंडेड बाय पीपल, लव चिलिंग विद पीपल। तो 11th में तो पढ़ रहे थे, जोश था कि पढ़ना है पढ़ना है। फिर 12th में आके ऐसा हुआ कि यार अभी थोड़ा लाइफ में दोस्त बहुत बन गए हैं, तो सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कभी गेमिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो 12th वाज व्हेन आई काइंड ऑफ टुक like step back unconsciously. थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, आई फेल्ट सिक वेरी क्लोज टू द जेई एग्जाम। सो अच्छा। 12th I dropped, like I didn't get a good result, but I was very confident कि यार अपन वापस देंगे एग्जाम, तो चांस अच्छा है, फंडामेंटल सारे क्लियर थे। फिर उसके बाद आई मूव टू जयपुर। मेरा जो रिपीट ईयर था आई वाज इन जयपुर। माय अच्छा। फादर गॉट पोस्टेड इन जयपुर। तो अच्छा। वो एक साल में जयपुर था, और जयपुर में रहने के दो फायदे हुए मुझे। एक तो ये कि जयपुर का जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन के जेई प्रिपरेशन सिस्टम था, वो बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस था, कि यू नाउ नो द थिंग्स, यू फोकस ऑन सेल्फ स्टडीज। एंड सेकेंड बिगेस्ट पार्ट फॉर मी वाज मेरे दोस्त नहीं थे वहाँ पे, तो मेरे पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ था नहीं, आई वाज हम्म। ओनली स्टडीइंग। तो दैट इज व्हाट वर्कड वेल फॉर मी। After that preparation, I just sat in the exam, and then like it went well. It's just that 6 घंटे का pressure हो गया चीजें. So that's अच्छा। how I ended up being in an IIT. और आईआईटी में जाके आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? वर यू आल्सो लाइक दोस्तबाजी में ज्यादा या फिर पढ़ाई में ज्यादा, कि दोनों? मतलब लाइक आईआईटी का एक्सपीरियंस कैसा था? आई अज्यूम 4 साल का कोर्स था आपका, 4 5 या 4 या 5? 4 साल का कोर्स था मेरा, yes. तो like engineering तो चलो obvious था, but why IIT happened was also because कि यार अब करना है तो टॉप से करना है ना, मतलब कुछ ऐसा कोशिश तो करते हैं। तो कभी ये नहीं था दिमाग में कि आईआईटी कॉलेज में जाके क्या पढ़ना है, कौन सी ब्रांच लेनी है, किस टॉपिक में रिसर्च करनी है, आगे क्या करना है उसके बाद। बस ये था कि अच्छा कॉलेज में जाना है। एंड देन फिर कॉलेज, माय फादर इज आल्सो एन इंजीनियर, एंड ही डिड हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम एमबीएम जोधपुर, व्हिच अच्छा। इज अनदर टॉप कॉलेज ऑफ दैट टाइम। अभी भी इट्स अ या ग्रेट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो उनसे बहुत किस्से सुनते थे, कहानियां सुनते थे कि यार कॉलेज लाइफ बहुत फन होती है, यू मेक ग्रेट फ्रेंड्स, यू हैव सो मच फन, यू आल्सो स्टडी, यू आर इंडिपेंडेंट, इतना फ्रीडम सब कुछ। तो दिमाग में वही इमेज थी कि यार अब कॉलेज जाके ना यही करना है। उसी चीज को रिपीट करना है। हाँ, कि ये सुना है, ये अच्छा लग रहा है, ये करना है। तो मैं जब कॉलेज गया तो फर्स्ट ईयर आई डेंट फोकस ऑन, आई वाज नॉट डूइंग बैड, बट आई डेंट फोकस ऑन अकेडमिक्स। माय फोकस वाज कि यार मुझे नए दोस्त बनाने हैं, मुझे अच्छे दोस्त बनाने हैं, और मुझे खूब घूमना है, मुझे सबके साथ बहुत फन करना है। तो थैंकफुली आई एंडेड अप इन बनारस। तो बनारस बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत, इट्स अ वेरी कल्चरली रिच सिटी आल्सो। कोर्स, हाँ। A lot of things that you can explore. It exposes you to a lot of aspects of life and death which any other city will not. So that worked out really well. तो मैं अपने दोस्तों के साथ, हम लोग बहुत घुमा करते थे, बनारस के सब तरह घाट, मंदिर मंदिर भी, सभी कैफेज, इट्स अ हिप सिटी आल्सो, सो वी यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। तो या first 2 years were a lot more fun. We had no pressure, but then in third year things started to change. Yeah, now we need to think of the next thing. Then we started working for opportunities of internships. फिर उसके बाद fourth year आते थे तो job का scene हो गया था कि now then that is the time when you start getting that clarity कि अभी क्या करना है आगे, तो अब अच्छा। फिर क्या करना है। तो yeah, first 2 years were a lot of fun, making friends, creating bonds for life. Like UG दोस्त आप जो बनाते हो, they stay with you for life.
सो डिड दैट फॉर द फर्स्ट 2 years. इस थर्ड फोर्थ ईयर में पढ़ाई लिखाई ये सब चालू कर दिया. और ये कौन से ईयर की बात है? I graduated in 2016, joined in अच्छा 2012. So yeah, अच्छा. 2012 to 2016. एंड देन उसके बाद क्या क्या जर्नी रही वहां से ग्रेजुएट करने के बाद? जब मैं BHU से निकला तो आई ज्वाइन मास्टर कार्ड एज एन एनालिस्ट विच इज इन गुड़गांव. तो 2 साल मैं मास्टर कार्ड के साथ काम किया. वहाँ भी हम लोग यूजी के काफी दोस्त, वी ज्वाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कैंपस ग्रेजुएट्स. तो वहाँ भी आई मेड अ ग्रुप, गुड ग्रुप. वी हैड फ्रेंड्स फ्रॉम IIT कानपुर, IIT खड़गपुर एंड सो ऑन. Then I worked there for 2 years, and then I realized that this is not my calling. Like, while I enjoy working in that field, and it was a very aspirational field at that time, I wanted to move more towards decision making, something which is, more result oriented than just कि हाँ अपना काम करके दे दिया. Mastercard is a consulting firm. Mastercard advisor is I was working. एडवाइजरी. So yeah, advisory. So then I wanted to move towards product. Even if I अच्छा. working as an analyst, I would work where I can, if there are some insights, you share the insights, you see an action being taken upon that insight right in front of your eyes, and then see the impact, how these things change. So that was really fascinating for me. So I joined Zynga after that. एंड So जिंगा क्या कंपनी है, अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आपके? लाइक आई पर्सनली नो इट बट. हाँ बिल्कुल. तो जिंगा इज अ गेमिंग कंपनी. जिंगा सोशल गेम्स बनाती है. आपने फार्मविल खेला होगा. फार्मविल एक बहुत पॉपुलर गेम है उनका. पान विले काफी आई थिंक ये फेमस है, जिससे आई थिंक लोग बहुत रिलेट कर पॉपुलर पाएंगे. था. हाँ. एग्जैक्टली. तो अभी टैक्सेस होल्डम पोकर उनका बहुत पॉपुलर गेम है. वर्ड्स विद फ्रेंड्स उनका गेम है. तो इट्स अ गेमिंग कंपनी. दे मेक गेम्स. अमेरिकन है? इट्स एन अमेरिकन अमेरिकन. कंपनी. अच्छा. इट्स हेडक्वार्टर्ड इन सैन फ्रांसिस्को. ओके. तो उसका आपने इंडिया ऑफिस में ज्वाइन किया? यस, आई जॉइंड इन अच्छा. बैंगलोर. उसमें क्या प्रोफाइल था आपका? प्रोडक्ट मैनेजमेंट की There I was तरफ था working. कि There I was working as a product analyst. प्रोडक्ट एनालिस्ट? अच्छा. Yes. और इसमें So, एग्जैक्टली प्रोडक्ट एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर किस तरह का काम करते हैं, मतलब अगर बिल्कुल. सिंपल वर्ड्स में आप बताना चाहेंगे तो? तो प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है चीजों को ओवरव्यू करना. जैसे मैं आपको एक बेसिक एनालॉजी देता हूँ. मान लो एक शॉपकीपर है. तो शॉपकीपर हम्म. जब शॉप खोलता है तो पहले तो वो उससे पहले ये सोचता है कि मुझे शॉप किस चीज की खोलनी है. वो सोचता है किस हम्म. चीज की डिमांड है. फिर वो सोचता है कि अच्छा मुझे शॉप खोलनी है, कहाँ शॉप लेनी चाहिए. अच्छा मुझे शॉप ले लिया, मुझे सामान किससे आएगा जाएगा. तो वो पूरी प्लानिंग करता है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और फिर वो करने से क्या होगा. दैट इज काइंड ऑफ द जॉब ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर. सो वी स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स. यूजर की नीड्स क्या है, यूजर कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी कैन सॉल्व, एंड व्हाट आर द हम्म. प्रॉब्लम्स इफ वी सॉल्व वी गेट a chance to make money, because there needs to be a business aspect of it. How will we या. make money? Then they define कि अच्छा चलो ये problem है, now we are going to solve this, what will be the best solution. So you work with the design team, your data team, to get the best solution. Once you figure the solution, you hash it down, and then your tech team starts working on the solution. So you overview as a product manager, overview कि implementation is going in the right direction, it is happening with the speed that you expected it to be. And once the execution implementation is done, your product is out, then you overlook how it is doing, how are users, like what is the users reaction to it. Are they liking the product? Are they interacting with the features the way you expected them to be? So तो yeah, that is. जैसे कि जैसे कि ये फार्म विला गेम है, uh, तो गेम मतलब गेम इटसेल्फ क्या होना चाहिए, कितने प्लेयर्स होने चाहिए, कितने लेवल्स होने चाहिए उसमें, उस गेम की अ, कैसे उसमें हार या जीत डिफाइन होगी, एंड प्लस बैकग्राउंड में जो जो एक बिजनेस आपके जो मैनेजमेंट जानना चाहेगा कि कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, क्या बिहेवियर है, कितने देर के लिए खेल रहे हैं, तो ये सब कुछ ही आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कि कोई पर्टिकुलर पार्ट इसका ज्यादा आता है वर्सेस अदर? ये एक तरह से सब कुछ ही आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में. तो इसलिए मतलब ये बहुत बड़ा पार्ट साउंड करता है. तो इसलिए छोटे छोटे चीजों के दे ब्रेक इट डाउन द प्रोडक्ट.
को, जैसे आई वर्क इन द एक्विजिशन टीम फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 में, अच्छा। फिर एक्विजिशन हो गया, फिर उसके बाद एक और टीम आएगी जो देखेगी कि अब यूजर आ गया सिस्टम में तो उसको कैसे आगे तक लेके जाना है। फिर देयर विल बी अनदर सेट ऑफ टीम विच विल बी वर्किंग कि अरे यूजर जो जा रहा है इसको कैसे रोकें। चीजों को बहुत ब्रेक कर करके, जैसे सोशल हो गया, सोशल एस्पेक्ट वेर आपके चैट वाले फीचर हो गए, आपके दोस्तों के साथ खेलने वाले फीचर हो गए, तो एक सोशल की टीम बन गई। तो उसमें भी मल्टीपल पीपल लुक एट स्मॉलर 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 फीचर। सो यू कैन अज्यूम कि एक एक फीचर जो होता है ना उस पर एक एक प्रोडक्ट मैनेजर काम करता है। अच्छा। तो बहुत अच्छा। सारे प्रोडक्ट मैनेजर collectively create that entire product. So yeah, each of these parts come under the product manager का purview, but broken down further. अच्छा। अच्छा। और जो सो आपने इस जो जिंगा कंपनी में कितनी साल काम किया आपने? मैं जिंगा के साथ 1.5 साल था करीब। अच्छा। ज्वाइंड इन 2018, सेकेंड हाफ अगस्त 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। एंड हाँ, अर्ली 2019 एंड में आई क्विट। अच्छा। अच्छा, एंड उसके बाद आपने क्या नेक्स्ट स्टेप लिया? सो जिंगा के बाद I was, I wanted to, that at that time I got the clarity कि भाई I want to move to product management. Like अच्छा। product analyst, we were discussing what the role of a product analyst is. I'll just briefly cover that. Product analyst, so as a product manager, you want to look at a lot of data points कि यार ये इसमें क्या चल रहा है, कोई फीचर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, and everything needs to be data backed. डेटा से ही आपका आंसर आना चाहिए। तो product managers work with product analysts in terms of getting the insights for specific asks. Then आपके data science initiatives होते हैं, that is where product analysts help you a lot. अच्छा। कि क्या models बना के can we make something which is more personalized, customized for the users. So those things come under the purview of product analyst. And जब मैं product analyst था तो मुझे थोड़ी clarity आ गई थी कि यार I want to move towards product management. I like this job. I mean, I would not agree with the definition, but they call a product manager a mini CEO because I mentioned to, if it's a shopkeeper, या he's a CEO of the shop. So I like that role. It entails a lot of ownership and stakeholder management. मुझे अच्छा लगा तो मैं उस तरफ जाना चाहता था। तो उस तरफ जाने के लिए मैंने फिगर आउट किया, व्हाट आर द बेस्ट वेज। तो एमबीए वाज वन ऑफ द वेज। तो आई रोट जीमैट, फिर मैंने आईएसबी के लिए अप्लाई किया। एंड ये 2019 एंड की बात है, तो तब मेरा आईएसबी में एडमिट आ गया था। फेब 2020 फेब में आई गॉट टू नो कि आई गॉट द एडमिट। तो अच्छा। आई वाज क्लियर कि भाई अभी जाना है। बट देन कोविड हैपेंड एट दैट टाइम। तो उसके बाद कोविड हुआ तो फिर द स्कूल गिव अस एन ऑप्शन इफ यू वांट टू डिफर, अगर आपको 1 साल बाद आना है तो आप आ सकते हो। तो आई चोज दैट ऑप्शन बिकॉज आई वाज नॉट वेरी, एमबीए इज अ, like MBA is supposed to be about people, connecting people, networking. So doing something like that as offline, I was a bit hesitant. So I chose to defer, and उस 1 साल I started working with Kyofit. Again, I was a senior अच्छा। product analyst there as well. But at that time, I was heavily into fitness. तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था उनका प्रोडक्ट, एंड इट्स अ कल्ट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। प्योरफिट क्या है, थोड़ा बताएंगे इसमें शॉर्ट में कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योरफिट एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप कह सकते हैं आप, बिजनेस कह सकते हैं आप। इनके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। मैं कल्ट के बारे में बताऊंगा। क्योरफिट के अंदर कल्ट आता है, विच इज आपका जो स्टूडियो फिटनेस होता है, जैसे जहाँ पे आपके जुम्बा क्लासेस होते हैं, आपके डांस फिटनेस टाइप्स क्लासेस होते हैं, योगा सेशंस होते हैं। कल्फिट उन सेशंस को कराने के लिए, लाइक इट्स नोन थ्रू आउट द कंट्री। अच्छा। तो ये सेशंस वो ऑफलाइन भी कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं। फिर इनका एक हेल्थ फूड्स करके भी है, हेल्दी फूड्स के लिए, वेयर दे गिव यू लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस, दे ट्राई टू सॉल्व अच्छा। फॉर यू। सो दैट इज व्हाट क्योरफिट डज। तो मैं फिर 1 साल उनके साथ काम किया। Then again, because it was a COVID year, they also moved to a model of like the online model. So they tried to move fitness online. So I was working with the Cult Live product that they have, which is workout from home kind of a thing. अच्छा। So live sessions, like a trainer will be training you online live with ऑनलाइन 50 लाइव। अच्छा। yeah.
So that is what that is the product that I was working with at that time. नाइस नाइस। एंड उस टाइम पे कितनी बड़ी थी ये कंपनी? Uh, in terms of employees, I would say 250, 300 people were there in the company at that time. एंड जब आपने छोड़ा कंपनी को, जब कितना बड़ी थी? I think तभी इतना ही था क्योंकि एक साल अच्छा में because it was a COVID year again. The company was still like trying to manage things कि अभी हाँ चल जाए काम. Once they are out of the entire COVID scenario, then they started expanding again. अच्छा अच्छा। एंड देन फिर आपने इसके बाद क्या स्टेप लिया? इसके बाद मैं फिर ISB ज्वाइन किया. तो एक साल में ISB में था. ISB 2021 में it started. And yeah, it's a 1 year course, like the one that I went for, PGP या course. It's a 1 year course. It's kind of a short MBA, more kind of executive MBA, but yeah, PGP course. एंड उसके बाद आपने आईएसबी के बाद जो आपकी करंट कंपनी है वो ज्वाइन की, ड्रीम जी 11। जी. एंड अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि जो पूरी आपकी जर्नी रही है राइट फ्रॉम 2012, जब आपने पहली बार सोचा कि चलो आईआईटी जाते हैं, आईआईटी में अच्छी लाइफ होगी, एंड अंटिल नाउ आपकी आपको क्या लगता है कि आईआईटी ने क्या रोल प्ले किया उसमें? आपकी जो कंपनीज है जो जिसमें आपने पहले काम किया उसने क्या रोल प्ले किया? किस तरह आप देखते हैं इन सबके ये पूरी जर्नी को, लास्ट आई थिंक 10 साल की जर्नी को? I think joining an IIT gives you two very big benefits. Like एक तो ये होता है ना कि you are a culmination of the people you hang out with. तो आप जब IIT में होते हो, आप देश के कुछ सबसे स्मार्टेस्ट लोगों के साथ होते हो. तो आपका सोचने का नजरिया बदल जाता है. आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी से भी दिखने लगती हैं. आप ज्यादा चीजों के बारे में क्वेश्चन कर पाते हो कि अच्छा ये भी ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, ये भी कर सकते हैं, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था. प्लस IIT में पूरे देश से लोग आते हैं, तो आप एग्जैक्टली। कल्चरों के बारे में भी जानते हो. तो दैट पर्सपेक्टिव. एंड देन ये तो तब की बात होती है जब वो 4 साल होते हैं. उसके बाद एज यू कीप मूविंग, यू हैव क्रिएटेड दीज बॉन्ड्स फॉर एवर, एंड दीज पीपल स्टार्ट बिकमिंग बिग इन देयर ओन एरियाज. सो आगे जाके आपको कभी भी कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ कुछ काम होता है, यू वांट टू अंडरस्टैंड सम इंडस्ट्री, और यू वांट टू लाइक कनेक्ट विद पीपल ऑफ एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, दैट बिकम्स रियली इजी. यू सर्च दैट कंपनी, आपको अपने कॉलेज के 10 लोग मिल जाएंगे, दो आपके बैच में थे, आप कॉल करोगे, दे विल बी हैप्पी टू आंसर. So that connection तो helps a lot. नेटवर्क उसका Work. काफी इम्पोर्टेंट है। Yes, that networks help you a lot, and it like उसका उसका helpfulness और बढ़ता जाता है with time. And second एग्जैक्टली। part, second part is the branding. Like obviously IIT being a big brand is something that compounds. So आप IIT, when once I did IIT, that was a brand which gave me credibility. Then I did ISB. Then IT और ISB के बीच में मैंने जिन जिन brands के लिए काम किया, in industry, brands are something that are very valuable. Like this brand ke saath this guy has worked, so basically they have kind of approved of this guy. So that brand compounds very well. So that is something that has worked for me over the past 10 years. Like again, IIT ka brand ho gaya, SB ka brand ho gaya. Mastercard is a huge brand. Zynga is a huge brand in its own space. Dream 11 is the biggest brand in its own space. So these brands help you a lot. It gives you so much credibility. Tomorrow when you go out in the market, people are willing to watch for you. एंड तो ये तो रहा फायदे वाली बातें जो आपने बोली, नेटवर्क हो गया, ब्रांड वाइज। कोई ऐसी चीज स्पेशली जो आप यंगस्टर्स को एड्रेस करना चाहेंगे, जिसको आपको लगता है कि इस एरिया में शायद थोड़ा सा जब आईआईटी में या उस माहौल में रहते हैं तो ध्यान कम रहता है, और शायद मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, या फिर मे बी आई कुड हैव वर्कड अ बिट मोर ऑन दैट। ऐसा जनरली होता ही है बिकॉज सबकी सबकी जर्नी अलग अलग रहती है, राइट? तो बिल्कुल सही. जो आपने फायदे वाली बात है वो तो आई थिंक काफ़ी क्लियर है।
बट कोई ऐसे पॉइंट्स जो आप बोलना चाहेंगे, अरे जो आज के टाइम को लेकर या आज के मार्केट को लेकर, अगर कोई यंगस्टर सोच रहा है आईआईटी में जाने का या आईआईटी में ना भी जाने का, तो दे शुड मे बी फोकस ऑन दोज थिंग्स। बिल्कुल। सो एक तो आईआईटी और उससे पहले ना हम लोग का फोकस सिर्फ पढ़ाई 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 पे होता है। बट विद टाइम, ओनली विद टाइम यू गेट टू रियलाइज कि यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इट, इट्स ऑल्सो अबाउट द वे यू आर showcasing your efforts. So presentation जो part होता है ना, that part is never taught to us. You know how to present the work that you're doing, or how to like showcase it outside, how to present yourself। सबसे बड़ा तो कि मैं कैसे लोगों के सामने प्रेजेंटेबल बनूं, क्या चीज मैं समझूं, लोगों से किस तरह से बात करनी है। All these softer aspects, but they play a huge role when you move in life. And the early you learn it, the faster you will grow in your early years. So I think that is one thing that is currently missing. और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि लोगों में हो तो अच्छा हो, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स क्लैरिटी। मतलब हम में भी नहीं है अभी तक क्लैरिटी। आई ऑल्सो स्ट्रगल विद इट एट टाइम्स, बट you know what happens is you talk to people who are 2 years senior to you. When you talk to people who are 10 years senior to you, they will be they can help you out कि यार ठीक है, you want to do this, but where do you want to be? Start thinking from that angle. तो हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, आगे बनना क्या है, किस तरह की लाइफ चाहिए। We think more about the immediate next step. What is the best outcome for the immediate next step that I'm taking? So I think getting clarity and like figuring out why you're doing what you're doing first before you start doing it. वो अगर आने लग जाए ना people में, so they'll be able to like more motivated in what they do. एंड जो पहली चीज आपने बोली, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन वाली, इसको आपने कैसे टैकल किया इसको अपनी लाइफ में? बिल्कुल। So yeah, it happened to me as a byproduct of the people I chose to be around. तो मेरे कुछ एक दोस्त थे जिनको मैं देखता था कि यार दे आर वेरी charismatic and they are able to handle these situations really well. So I used to sit with them. I used to observe them at times in such situations and used to see how they're doing it, what they're doing. That, and then there are a lot of courses available online. You can anytime go there, take help from these courses. फिर देखो क्या होता है ना, these things comes with practice. The more you practice, the more you put yourself into these positions of discomfort, the more you learn. So कोई ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहेंगे, कोई इधर फ्रॉम आईआईटी और इधर फ्रॉम वन ऑफ योर जॉब एक्सपीरियंस? तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं आईआईटी में था तो मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए आई वेंट। दिस वाज अ प्रेजेंटेशन इन क्लास एंड आई हैड नो क्लू। आई वाज लाइक हाँ ये ऐसे बोल दूंगा, ये ऐसे समझा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा, आई नो दिस, आई नो दिस। एंड देन वंस आई वेंट देयर आई वाज ऑल ब्लैंक मेन देयर मीन्स लाइक स्टेज इन पे द या रूम। फिर लोगों के या सामने? once I was there in the room presenting in front of everyone, including the professors, I kind of went blank and I was like, "What am I supposed to do?" I was mumbling and everything. All those things started happening. Then over time, I first figured what went wrong. So few things that went wrong were I I had idea about what to speak, but I did not have like detailed ideas कि मुझे इस बारे में इस चीज को बात करनी है, इस पॉइंट पे इन चीजों को कवर करके बात करनी है। So having that detail, basically having a structure in your mind, the more you're structured, the better you take it forward. So like then that was the place where I learned it. Like first I started to realize that that's a problem. फिर उसके बाद I started to make things more structured कि अच्छा break it down, जो भी चीज है, steps, bullets, points, 1 2 3 ABC. The more you break it down, the better it is for you to carry out in the flow. एंड आपको क्या लगता है कि इसका ऐसा क्यों था? ये ऐसा आपका आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर पाए, इसका रीज़न ये था कि इसके पहले कभी मौका नहीं मिला ये करने का, या स्कूल में, या फिर जेई की प्रिपरेशन के टाइम, लाइक It starts व्हाट डू from यू the J थिंक? mindset only, yaar. It starts from the PCM wala mindset.
ऐसा तो नहीं है कि हमारे कोर्सेज नहीं थे कम्युनिकेशंस के, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश, आपका ग्रामर हो गया, ऑल दीज थिंग्स सब्जेक्ट्स वर देयर, हैंड राइटिंग इज, आपका इनिशियली कभी फोकस ही नहीं रहता है व्हेन यू आर इन दैट एनवायरनमेंट कि यार हम्म इंग्लिश में कितने नंबर आ रहे हैं, हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, पीपल डोंट केयर मच। हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं, पीपल केयर अ लॉट। तो आपकी हैंडराइटिंग कैसी है इससे किसी को फर्क इतना नहीं पड़ता जितना आपके मैथ्स के मार्क्स से करता है। तो जब आप शुरू से वो माइंडसेट कल्टिवेट करते हो तो आगे जाके फिर आपका कभी ध्यान जाता नहीं है कि चीजें दिख कैसे रही है, इसलिए क्या चीजें हो रही है। हम्म हम्म Things getting done. So I think that played a huge part, uh, which is a culture thing, especially in a city like Kota. Like if you talk to students in Kota, they don't care. They are like मुझे marks चाहिए. I don't care. वो भी PCM में. I don't care मुझे बाकी subjects में क्या आ रहा है. So yeah. और उस टाइम को कंपेयर करें अभी के टाइम से, तो आई एम श्योर यू वुड हैव लाइक प्रोग्रेस्ड अ लॉट। उसमें व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट डिड यू पुट इन, और वाज इट जस्ट लाइक कि टेक इट एज इट कम्स? ये take it as it comes ही हुआ mostly, but that happened because क्योंकि मुझे पता था मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, which involves me in these positions a lot. तो अपने आप ही विद एक्सपीरियंस यू लर्न दीज थिंग्स विद टाइम। आपको 1000 प्रेजेंटेशन करनी है तो अपने आप सीख जाते हो थोड़ा बहुत, आपको आ जाता है चीजें, बिकॉज यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स योर वर्क, यू एंड अप लर्निंग दोस थिंग्स बाय डिफॉल्ट। ओके। एंड दूसरा पॉइंट जो आपने बोला था अबाउट क्लैरिटी, so I think that probably is a more not a short term, doesn't have a short term solution on that direction. Like, would you like to elaborate कि इसका क्या, what do you mean by कि clarity पे students को काम करना चाहिए या फिर right mentorship लेनी चाहिए? वो वो क्या है, एंड आप कहाँ पे हैं उस जर्नी में, तो अगर थोड़ा बताएंगे तो। सी like the solution part of that lies a lot towards you talking to people, you learning from people's experiences. तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग, जस्ट मुझे जैसे मेरे को नहीं, मैंने एज आई टोल्ड यू कि मुझे आईआईटी करना था, बस इतना मुझे पता था कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है। अब कोई मुझसे पूछता तब कि अच्छे कॉलेज में क्यों जाना है, तो फिर मैं और लाइक इफ यू गो इनटू दैट व्हाई सर्कल की, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, व्हाई डू यू वांट दैट, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, देन यू या कम टू द गुड प्रॉब्लम वेयर यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व। नाउ यू गो बैक कि इज गेटिंग इनटू आईआईटी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट, is that the right solution for me? So having these introspections with yourself, sitting and writing it down, ki what I want in life, these things help you a lot in getting clarity, first from yourself, and second is then you start talking to people कि अच्छा मैं अगर आईआईटी में जाना चाहता हूँ तो आईआईटी में जो लोग हैं अभी उनका क्या एक्सपीरियंसेस हैं, 10 लोगों से बात किया, आई गॉट टू नो फ्यू थिंग्स, फिर वंस यू नो टू गेट इनटू आईआईटी, व्हाट यू वांट टू डू, मेरे को आईआईटी के बाद एमबीए करना है, आपने और सीनियर लोगों से बात की, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू कलेक्ट पर्सपेक्टिव्स, द मोर knowledge you have, the more data points, the more informed decision you take. So that helps you in getting clarity. एंड उस जर्नी में आप कहाँ पे, लाइक 2012 2016 कंपेयर टू लाइक पोस्ट एमबीए अभी, इफ यू आर ओपन अबाउट इट कि आयु आपने कुछ और सोचा था कि हाँ लाइफ ऐसी होनी चाहिए या फिर मेरा करियर या मैं ऐसा होना चाहिए, एंड इट इज इन द सेम डायरेक्शन, या फिर आप यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट? Yes, I think it has been in the direction that I expected it to be so far. But yeah, I do try to, connect with people from different aspects also to understand क्या चल रहा है, and I have a couple of mentors जिनसे मैं रेगुलर बात करता हूँ कि अभी क्या ये लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है प्रोफेशनली, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई डू, I share with them what I am feeling and then what I aspire for next. So they share their inputs ki you can try this, you can try that, discuss the problems that I face with them.
So yeah, I've been improving on that front a lot. पहले थोड़ा hesitant ज़्यादा रहते थे कि भाई ज़्यादा सीनियर है इनसे कैसे बात करें कैसे करें, but with time you get to know कि we are all in the same boat. सबसे बात कर सकते हो, अब इतना कुछ दिक्कत की बात नहीं है. So yeah, I think I'm doing fairly well, but I still feel there is there's scope, more scope that these things can be solved. एंड इसमें भी दो एस्पेक्ट है, राइट? एक तो प्रोफेशनल क्लैरिटी कि भी क्या मुझे इस प्रोफाइल की तरफ जाना है, या फिर प्रेसिडेंट बनना है, या सीईओ बनना है, या Hmm. फिर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है जिसका कोई अलग बेटर प्रोडक्ट है, या फिर जोग्राफिक फोकस अलग है। और एक है उसके ऊपर की क्लैरिटी, मेटा लेवल क्लैरिटी, कि किस तरह का इंसान मैं बनना चाहता हूँ, लाइक Exactly. फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई है, अभी फैमिली हो गई है, घर है, गाड़ी है, बट where do you see yourself when you are, let's say, 40 or 50? Not in terms of ki bank balance kitna hai, but what do you want to do? I want to have your own company, ki want to do something completely different in a different geography या country. उस हायर लेवल की क्लैरिटी के बारे में भी आप सोचते हैं कि इज दैट काइंड ऑफ फॉर यू वन एंड द सेम थिंग? I do, I genuinely do think about it. Like it makes a huge difference. Like if you know ki, like as you mentioned, what kind of a person you want to be. If you know that, then you are able to move towards that direction while ensuring you're professionally going compromise nahi karna. Like knowing that direction helps you a lot. So like for me personally, I know I prefer a life which is abhi it's a fast-paced life, but eventually I would want to live a slow-paced life where like things are comfortable and ऐसा नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे हो लाइफ में, आप एक्टिव हो, आपके दो तीन स्मॉल बिजनेसेस में भी फॉर एग्जांपल आर ऑपरेटिंग, बट यू हैव केप्ट दैट, यू मेड देम सेल्फ सस्टेनिंग. तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, यू आर मेकिंग डिसेंट मनी आल्सो, एंड यू आर एंजॉयिंग लाइफ कि एट द एंड लाइक meeting people, going out, hanging out, traveling, doing these things, gathering perspective, learning new things. Those things, for that you need time. And for time, you need to first be financially in a place where you're like, yeah, I've made it. So yeah, हम्म। I do think about that a lot. Like I keep having these discussions with my wife also. Ki, what do you think we should be doing 40 years down the lane? What do you think 30 years down the lane? What should we do? We explore options. We go into that dream wala mode. Ki, "Arey, ye karenge, ye karenge, ye karenge." Explore those things. Like it's. हम्म। एंड आपने जो ये क्लैरिटी वाले भी पॉइंट पे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। हैव यू सीन अदर्स, जैसे कि आपने पहले ही बोला कि यू लुक्ड अप टू योर फ्रेंड्स और पीपल हु आर लाइक कैरिज्मेटिक और वट एवर दे आर गुड इन फील्ड, इन एनी फील्ड, what is clarity wala exercise also? Can you share some examples of your batchmates or colleagues or people whom you know who took these unconventional paths for finding that clarity in life? If you know someone of, would you like to share some examples? I'm trying to think of examples other than Parth. It could be any sort of like path. It could be someone being a social worker or administration Yeah, or so a whatever, lot of like a lot of relocated to some other place or yeah. mountains or whatever. Yeah, so I think that has not happened yet. I'm sure that will happen. It'll take some time. But I know people, like I mean UPSC की preparation तो सभी करते हैं, but like people they explored all their aspects that they can do, like कि चलो UPSC जाते हैं. Then someone took a path of no, I think they started a startup and then they realized no, I think it's not working for me. Then they moved to US to pursue PhD. During PhD, they quit the job, the PhD itself. Yeah, I don't think this is the right thing for me. So people keep hopping until they find that like maybe this is the thing. So I think even though I am almost 7 years since my graduation, we are still in the early years of our exploration as a group. So maybe if you ask me this question after 5 years or 10 years, I'll be able to give you a lot more examples uh, of these cases. Yeah, and like social service is one of the field where a couple of friends have gone, but they've also gone through the route of consulting, for example. So they are it's not exactly.
them being doing a social work, but kind of aligning Yeah, their industry with, advisors yeah. to these foundations or these kind of businesses. So aligning their profession with the aspiration that they have in that sense. Acha, acha. And lastly, I would like to ask you a question about on the lines of having clarity in life or developing your skills like communication, your presentation. What would your message be of the Shubham 10 years ago or 12 years ago or 15 years ago? So people, students who are studying in Kota or probably some of our viewers. So if I were to give this message to the students of Kota, I mean, I would say, if at this time you have the clarity that you have to go for JEE, you're clear ki you want to be in IT, you're definitely working very hard in that direction, but continue to invest time in other things as well. दिन का आधा घंटा एक घंटा निकाल के talk to people, uh, talk to people who have a lot more experience, join some course online. Do not underestimate the soft skills, do not underestimate the structure part of anything. Like even when you're solving a problem, there's a structure, Hmm. there's step method, 6-step method. So these are all ways to structure, all ways Yeah. to uh, make things more presentable as well. So keep focus on that. But I know it's very hectic. Abhi to everyone will be swarmed with all the work from their coaching. तो अभी वो उसमें तो ज़्यादा effort लगेगा ही. Maybe not during the years of your 11th and 12th when you're preparing for JEE, but after the JEE, you need to be very actively involved in these things, working on the softer skills. बाकी material तो बहुत है यार. It's a skill that you need to, and it's a skill. It's not a talent. So you can get it, gather it. बहुत सारे courses available है, so you can do that. Nice, very nice. All, I would rather say कि this is more important for people, for students who are till the 10th class. They should be more try to be as extroverted as possible. That helps a lot. ओके। हम हम लोग भी एक इनिशिएटिव का सोच रहे हैं कोटा में, मैं और पार्थ। तो उसमें बेसिकली इट्स एन इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम स्लम्स, Mm-hmm. तो who are in the teenage like 14 to 16 years of age, and who do not have good examples to follow in terms of career, in terms of life path. What we are doing, so हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट आते हैं उनसे हम हमेशा पूछते हैं if they are willing to have a mentoring session with some of these selected students. And I think you are in Mumbai, so maybe in person may not be possible, or whenever you come to Kota. So Sure. usually in person, like on a lunch, we set up this date kind of with the mentor and these students where they can ask any questions to them. Okay. So imagine somebody asking question to you they never saw, or don't know how what it is to work in these big tech companies Mm-hmm. or to do management, or they Mm-hmm. can ask question to IPS officer. They don't know how to become a police officer because Mm-hmm. their parents, their uncles, their everybody is a driver or a cleaner or something like that. So हम like initiative चला रहे हैं. If you're interested, then we can also would love to have you on that initiative. Sure, yeah, Pallav. This is a great initiative. I mean, like, I really appreciate you guys for this giving back initiative that you have taken, in general, to the podcast as well. Yeah, Uh, I would be happy to help. Yeah, I mean, it's great. Like, like I know myself ki, like, abhi recently I went to Banaras for 3-4 days, and there also we interacted with a lot of students. We tried to host a session also with them, so that nice. like things that I was not aware of, we can let them know. So they don't feel ki, maybe even if it's able to benefit 4-5 people, then they'll at least be like, कि यार हाँ, I had this session with people with so Yeah, much yeah. experience below. So So that's yeah, what we are talk trying to about do. this. We'll set it up and we will let you know. Like, Yeah, sure. That works below. amazing. Okay, thanks a lot for your time. And Sure. yeah, and we will be in touch, and Parth will get in touch with you hopefully with the edited version of the video. Yeah, and have a nice weekend. You too, Bello. Have fun. Okay, bye. Bye. See you.